नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, हमारे जो पेंशन एक्टिविस्ट श्री CN वेणुगोपालन सर ने सेक्रेटरी DFS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा 21 फरवरी 25 को रिगार्डिंग नॉन रिवीजन ऑफ पेंशन इन बैंक्स फॉर पास्ट 3 डिकेड्स एंड पेमेंट ऑफ पेंशन इन रीजनल रूरल बैंक्स फ्रॉम 1 नवंबर 93। पेज थोड़ा ये पत्र बहुत लंबा है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जिस्ट आपको बता सकूँ, और कोशिश करूँगा कि आपको लिंक दूँ जिससे कि आपका पूरा का पूरा पत्र पढ़ सकें। हालांकि हमारे रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन पेंशन एक्टिविस्ट कंटिन्यूअस हैमरिंग कर रहे हैं, आइदर IBA, आइदर फाइनेंस मिनिस्टर, आइदर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सब के सब जैसे कि किसी पत्थर से लड़कर कुछ लौट आता है, उसी प्रकार से द प्रोवर्ब में फॉलोइंग योर कंसेंट इन द एफिडेविट, द प्रोवर्ब व्हाट इज गुड फॉर द गुड गूस इज गुड फॉर द जेंडर teaches us that what is appropriate in one case is also appropriate in the other case in question. Following your consent in the affidavit filed before the Honorable Supreme Court in Contempt File 1798 of the 2018, C. Raja Reddy versus Rajiv Kumar arising out of SLP of 2012, you have paid pension in the regional rural banks with retrospective effect from 1st November 93 on the basis of the settlement dated 29th October 93 entered into pursuant to Section 2P of the Industrial Dispute Act 1947 between the IBA and the All India Bank Employees Association. This implies that you recognize and acknowledge the validity and the sanctity of the settlement. Yet, what is holding you back from the revising the pension of the employees retired from the government-owned bank premising on the very same settlement? The payment of pension in the RRB on the basis of the settlement dated 29th October 93 reinforce that the settlement is in force and effect according to the DFS, also and going by clause 6 and 12 of the settlement, which underline that the pension scheme in the state-run banks is exactly on the premise of the pension scheme in the Reserve Bank of India. Pension in the state-run banks has also to be updated from 1st March 19, and arrears of pension along with the interest has to be paid, if not from 1st November 93, the date from which pension has been sanctioned in the RRBs. The minutes of dated 26 March 94 of the meeting of the Small Committee on the Pension, mentioning in the preamble that the pension regulation to be adopted by the Board of Banks has to be similar lines as in the Reserve Bank of India pension regulation applicable to the Reserve Bank of India employees and Central Civil Supply Services pension rules applicable to central government employees with suitable modification in relation to its applicability to the banking industry. Clause 4.2 of the minutes agreed that the formula for updating pension should be on the same lines as given in the Reserve Bank pension scheme, and also that any change therein should be introduced only after the mutual agreement. You are also aware that the DFS knew that if pension in the Reserve Bank of India is updated, similar updating will have to be done in the banks and the financial institution, as this was reason stated by you in your letter dated 28 February 2019 addressed to the Reserve Bank of India while declining the recommendations of RBI to update the pension of its employee. But when you updated the pension in the RBI by various factors based on the data of retirement of employees with effect from 1st March 19, vide your letter dated 5th March 19,
you did not grant similar updating of pension in the state-run banks, making them breach the industry-wide settlement dated 29th October 93. In the wake of sanction of the pension in the RRBs from 1st November 93 of the basis of the settlement dated 29th October 93, it is obligatory on the part of the DFS to grant updating of pension in the state-run banks forthwith, at least with the effect from 1st March 2019 as done in the RBI, and to direct all banks to pay the arrears together with interest, especially in view of the fact that the payment is out of the pension funds, which is the property and the deferred wages of employee, and not out of the revenue account of the banks, and the pension fund of all banks including State Bank of India have a corpus of 4,27,660 lakh crore as on 31st March 24, with an annual increase of over rupees 49,000 crore during the 23-24. Hope the entire gamut of issues is now clear to you, that you will do the right straight way. A copy of this letter is being sent to the Indian Bank Association with a request to permit you to go by the rules, as you may opt not be able to do the right without their approval. श्री CN वेणुगोपाल। 29/10/93 में स्मॉल कमेटी जो मीटिंग हुई, जिसके जिस्ट से क्लियर है, क्योंकि और फिर उसी बेसिस पे रीजनल रूरल बैंक्स में विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट से ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। फिर एक क्लास साफ साफ लिखा है कि जो बैंकर्स का पेंशन रेगुलेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक के पेंशन स्कीम के आइडेंटिकल है, और अपडेशन जब भी होगा तो इन्हीं के रूल के आधार पर किया जाएगा। मार्च 19 में आरबीआई में एक बार हुआ, फिर 23 में दोबारा पेंशन अपडेशन हुआ, लेकिन स्टेट रन के एम्प्लॉइज को, स्टेट रन के बैंकर्स के लोगों को क्यों इससे मोहताज किया जा रहा है? रिजर्व बैंक उसी गाइडलाइंस के आधार पे आपने आरआरबी में किया, इन्हीं सब गाइडलाइंस के आधार पे आरबीआई में हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज पे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो रहा है। फिर स्टेट रन के एम्प्लॉइज के लिए बैंक पेंशन अपडेशन करना हिच क्यों है? और इसके लिए सबसे बड़े दोषी एआईबीए के लीडर्स हैं, जिन्होंने इस एग्रीमेंट को एक बार भी उजागर नहीं किया कि इस एग्रीमेंट के तहत हमें स्टेट बैंक के, स्टेट रन बैंक के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका पेंशन रिवीजन या अपडेशन होना चाहिए। पेंशन एक्टिविस्ट हमारे लगे हुए हैं, लेकिन जो मेन यूएबीयू के कल्प्रिट हैं वो हमेशा पीछे हट रहे हैं, और फिलहाल स्ट्राइक में भी पेंशन अपडेशन का एजेंडा इन्होंने नहीं प्रोमिनेंट किया है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।